Good morning, everybody. Welcome back to my channel to yet another video of mine. How are you all? And I hope you all are doing really good. And my girl is growing up and growing more smarter and confident. I like. In this video, I have decided to share with you guys the leftover vegetables that are there in our refrigerator for in the weekends, how to preserve them and how to store them and prevent them from getting ruined and soggy, and it also help us in saving some money also. वीकेंड स्टार्ट होने वाला है एंड हमारे फ्रिज में कुछ लेफ़्ट ओवर वेजीज़ है जिसको हम पहले से स्टोर करके रखेंगे अच्छे से एंड प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि वो सड़ ना जाए, रॉट ना हो जाए। एंड जैसे मैंने बताया कि वीकेंड है तो मेरे हस्बैंड मार्केट जाएंगे एंड फिर से वापस से वेजीज़ कलेक्ट करके लाएंगे, लेकर आएंगे। बहुत सारे ग्रॉसरीज भी लेके आएंगे जिसको हमें फ्रिज में स्टॉक करना है। सो ये जो लास्ट वीक का जो वेजीज़ एंड जो भी कुछ है लेफ़्ट ओवर वो सड़ ना जाए, इसके लिए मैंने सोचा कि चलो पहले ये आप लोग से शेयर कर लेते, साथ साथ अपना काम मैं इस तरफ से उसको प्रिजर्व करती हूँ। अगर आप लोग किसी डिफरेंट वे में प्रिजर्व करते हो देन डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, तो मुझे भी आप लोग से कुछ लेसन मिलेगा कि कैसे इसको प्रिजर्व करना है नहीं है। एंड जिसके घर पे टोडलर्स है एंड मम्मीज़ हु आर हैविंग देयर टोडलर्स, यू कैन टोटली रिलेट कि कितना डिफ़िकल्ट होता है टोडलर के साथ ये सब चीज़ को मैनेज करना। तो व्हाट आई डू इज़ दैट लाइक कुछ भी प्रिपेयर, कुछ भी कुक करने से पहले मैं वो चीज़ थोड़ा सा प्री प्रेप करके रखती हूँ ताकि जब मैं कुक करूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो कुकिंग में। जल्दी एकदम क्विक कुकिंग करके मैं किचन से बाहर आके अपने बेबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ। नहीं तो फिर वो आ जाएगी, मुझे कुछ ड्रॉयर खोलने लगेगी, कुछ फेंक देगी, तो वो से बहुत डिस्टर्बेंस आता है। तो इसलिए उसको मैनेज करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके कुछ चीज़ पहले से प्री प्रेप करके रखती हूँ। जब मैं कुक करूँगी वो बस ऐसे ही एक्यूमुलेट करके डाल देती हूँ एंड मेरा खाना बन जाता है एंड इट बिकम्स रियली वेरी डिलीशियस एंड हेल्दी एज वेल एज टेस्टी। कुछ ख़राब नहीं होता है। सब बोलते हैं लाइक इट स्टेज फॉर अ मंथ, बट आई ट्राई टू यूज़ द प्रोडक्ट विद इन अ वीक एंड मेरा ख़त्म भी हो जाता है विद इन 5 to 6 days, मेरा ख़त्म भी हो जाता है। तो दैट ट्रिक आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइज। अगर आपको अच्छा लगता है देन डू लेट मी नो। एंड So let us start with ginger. I have not taken out the peels of the ginger because they are very flavorful and very good. I have just cut them into pieces and put them in the mixie jar and make a paste out of it. And as it become paste, I have stored it in this container and put it in the freezer. Some fresh coriander leaf with some little bit of salt and little bit of oil, and I have given it a good mix and then again stored in the same container where I have kept the ginger. Next we'll talk about the tomatoes. This is called the eye of the tomato. This is not good for our health and we should cut it off before we eat or do something out of it. Now I have cut them into pieces and I have taken out the eyes of the tomatoes where the air passes into it, and that is the reason why it gets ruined very quickly, very soggy. Put the tomato puree into the kadhai and cook it for a while, and as the water reduces, put some salt and some oil and store them into this containers, into this silicone containers or whatever containers you have. I have this much, so I kept it here. And after a few hours it solidifies and it becomes a chunks. You can take it out as whenever you feel like, or you can keep it here. I have got another packet, that is what I am showing you. I am taking out some chunks and use them in my cooking. It saves a lot of time and it is
You won't get the raw flavor out of it. The ginger and the coriander paste, the ginger paste without salt or anything, because sometimes we use that in our tea or anything that is sweet. So this is a beautiful flower in a garden, mini garden in the balcony. So I thought of sharing with you guys the beautiful flowers. So we are out in the road and about to go to the market for some shopping of some kitchen related stuff or some work in the market. लवी को अभी बलून चाहिए। Labi wanted to buy this गोदी balloon में and उठ she के चढ़ started गई थी, crying उसको and नहीं asking करना her है। father to get some. So we are buying some balloons for her, but we have only bought one balloon. But she's it is not enough for her. She's asking for some other toys. कौन था कि डक पापा के बोल ডাক নেবে ডাক নেবে ও ডাক আছে ডাক নেই কত করে ডাক জিজ্ঞেস করো নেই দাদা 60 रुपए This is a khari nearby to my place. There's a beach out there, but it is closed due to the COVID reason. And it is a beautiful place where we can walk, we can sit, and we can chill here and have some snacks like fuchka and etc. As Lavi wanted some more toys, so we are here in this shop to get some more toys for her, some kitchen sets, because she come to the kitchen and she takes away all my kitchen stuff. So we decided to give her a kitchen set so that she get busy with her own kitchen set and don't disturb me while I cook. Going to some other shop for my own kitchen stuff. I needed to buy something for my own kitchen. So sorry guys, I cannot able to show all the thing because Labi was there in my hand. I cannot able to take any videos or photos. So I just went there and I just came down. We bought some kitchen set for her. See, कप ये देखिए, अब डेली ये मेरे को चाय बना के पिलाएगी, खाना बना के खिलाएगी. Isn't that lovely? Yes. और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग किए थे. जब से आए हैं ये शॉपिंग करके, टॉयज शॉपिंग, तब से लेकर अभी तक शी इज़ हियर ओनली. शी इज़ नॉट हैविंग एनी फूड, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्लीप, शी इज़ नॉट ब्रशिंग हर टीथ, शी इज़ बिजी विथ हर टॉयज, हर किचन सेट्स.
She was telling me like, Mama, you make me have food. Mama, you make me have brush my. You make my teeth brush, so and so on. She's very happy. She's very happy and she's in her own world. देखिए how she's playing happily. So guys, if you like my video, then do like it, share with your friends, and do subscribe to my channel so that I make this kind of a content for you guys. And stay blessed.